Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Engleem English Made Easy with Saleem. So आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है which is also about confusing subject. So इस वीडियो ऑफ सीरीज के अंदर हम वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे which you feel that they are very easy but when they come in test they become so tricky. So चले चलते हैं स्क्रीन पर. So we are on screen everyone. So let's start. So let's start from the pseudo-plural nouns. अब वर्ड pseudo का मतलब क्या होता है? वर्ड pseudo का मतलब होता है कि फेक, यानी कि ऐसा कोई नाउन हो जो कि आपको प्लूरल नजर आए, that look plural because they end in s, यानी कि ये सारे जो सारे pseudo-plural nouns हैं वो s पर खत्म होते हैं, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन द मीनिंग, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो सिंगुलर ही होता है. सो जस्ट लुक एट द नंबर. वन एग्जांपल इज गिवन हियर. द न्यूज डैश aired by unofficial person, spoken person. Option number A is R, and option number B were, and option number C have been, and the D is has been. The correct option is, okay, they look like a plural subject, plural nouns, but we will consider them as a singular. तो हम यहाँ पर singular verb रखेंगे. The question number 2 is mathematics dash considered a difficult subject by many students. That's a true. Again, we will put singular. Number 3, economics dash an important subject. If you can see, the economics ends in S. Option number A should be the considered as a correct option, or we can consider was. Both are correct because there is no any specific period or time is given. Number 4 is measles dash more common among children than adults. So measles are, measles were, or measles is. So the correct option is C. The measles is. The MCQs number 5 is 5 years dash a long time. So we will say ये तीनों जो हमारे verb हैं, they are plural, and we will put here is. 5 years is long period. तो ऐसे हमारे, यानी कि this is a subject verb agreement says pseudo plural nouns, यानी कि ऐसे noun जो कि हमें प्लूरल नजर आए, एस पर खत्म हो, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. वी विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल नंबर 3, कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, so just try to just comment us and subscribe our channel. Thank you so much.